applicant Millard is behind bars since 1912-21. But other three accused Millard have been granted bail Millard. The distinguishing feature for him was Millard that he was named Millard in the dying declaration of the deceased as the person who had pushed the deceased Millard in the fire. If your lordship may have the FIR at page 19, 19. एक सेकंड जी 19 जी The incident Millard. उसके बाद उसका डाइंग डिक्लेरेशन है Dying डाइंग डिक्लेरेशन में उसमें आपका नाम लिया है पेज 64 पे हमने लिखा है ये बात Millard में just see page 21 dying declaration को reproduce किया FIR में. And the allegation has been made that the present applicant Millard pushed him in the bonfire. जी जी All of them Millard were consuming liquor. जी And the allegation has been made. Your lordship may just have Millard seventh line from bottom. मधु लोधी, कुलदीप लोधी, दशरथ लोधी व भरत लोधी शराब के नशे में होकर मुझसे वाद विवाद कर झगड़ा करने लगे. तभी मधु लोधी ने जान से मारने की नियत से मुझे पीछे से धक्का दे दिया जिससे मैं जलती हुई आग में गिर गया और मेरे कपड़ों में आग लग गई जिससे मेरे सीने, चेहरे व शरीर में अन्य भाग पे जल गया. तभी मैं अपने आप को बचाते हुए जलते हुए कपड़ों को वहीं पर फेंकते हुए अपने घर आ गया. Now, Lord, after this, if your lordship may turn to page 23, his 161 statement was recorded by the police. The same Lord injured. डाइंग डिक्लेरेशन तो डॉक्टर ने रिकॉर्ड किया है ना वो डॉक्टर का तहसीलदार वाला है. Your lordship may kindly see just 2 points I'm making. Page 23 here he says, उसी के लड़के कुलदीप द्वारा मुझे धक्का देकर आग में जला दिया. चलिए Then your lordship, 12 का है then yes, my lord. Now if your lordship may just come to PW5, not that dying declaration. and where is the dying declaration That's part of the charge sheet, my lord. Yes, दिखाई है डाइंग डिक्लेरेशन दिखाई दे मतलब इसकी लेडी सेड कि मधु ने धक्का दिया. नायब तहसीलदार के सामने बोल रहा है ये इसकी वैल्यू है एविडेंशियल वैल्यू इंस्पेक्टर की तो कुछ है नहीं. Your lordship may come to page 51. Both the doctor and the tehsildar have been examined. हाँ ठीक है पेज The doctor says, Lord, that his seal and the signature, my lord, it is not his seal and signature. I don't know who has put my seal and signature on the dying declaration. The doctor says that I don't know who's given the fitness. 51 Page 51, my lord, PW5. The doctor. हाँ And your lordship may kindly have, my lord, हाँ the relevant part. My lord, page paragraph 10. Paragraph 5, he says, my lord, when he was admitted, nobody told him as to how he had caught fire. And there was, my lord, in the Tehrir, nothing was given, my lord, by these witnesses. Lord, it says, ये कहना सही है कि एक मृत्यु. सेकंड रुक जाइएगा Yes, ma'am. जी Lord, ये कहना सही कि मृत्युकालीन कथन प्रदर्श कौन सा पेज पे पढ़ रहे हैं Lord, para 10, page 50. 10 यस Last line, हाँ apologize, मिनट वो सर्टिफाइड वैसी निकली उसका टाइप कॉपी भी कराइए. जी। ये कहना सही कि मृत्युकालीन कथन प्रदर्शनी 5 में मेरे नाम की सील 2 स्थान पे लगी है. मृत्युकालीन कथन प्रदर्शनी 5 मेरे सामने अभिलिखित नहीं हुआ था और उस पर मेरे नाम की सील के ऊपर असेह भाग में मेरे हस्ताक्षर भी नहीं है. वे दोनों हस्ताक्षर मेरे नहीं हैं और मुझे नहीं मालूम कि हस्ताक्षर किसके हैं. हॉस्पिटल में पदस्थ प्रत्येक डॉक्टर की अपने नाम की सील होती है. मुझे नहीं मालूम कि मृत्युकालीन कथन D5 पर मेरे नाम की सील किसने और कब लगा दी. तो तहसीलदार सब भी एग्जामिन हो गए क्या? तहसीलदार भी एग्जामिन हो गए. हाँ, और तहसीलदार कहते हैं कि डॉक्टर की सील. आप ठीक है तो डॉक्टर तो पैसे लेके कुछ भी कर सकते हैं. तहसीलदार साहब क्या कह रहे हैं बताइएगा. डॉक्टर इफ यू लॉर्डशिप में काइंड मतलब वो उसमें डॉक्टर साहब की जांच कराने के लिए बोल देते हैं इनका इनके हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से जांच करवा देते हैं इनके सिग्नेचर हैं कि नहीं है और सील की भी फॉरेंसिक जांच करवा देते हैं. उसके बाद डॉक्टर साहब को मेडिकल काउंसिल से जो है बार करवा देते हैं. पूछ लीजिएगा डॉक्टर साहब से. not just two not two things I'll point out. These are the consequences which I am seriously contemplating
that doctors come to court and give false evidence, they should be prosecuted. They should be. My lord, two things I'll just point out, my lord, why this is the case. Your lordship may just come to further paragraph 11 onwards. The prosecution, my lord, does not re-examine him on this. ये तो वो तो And the you understand है. Do you conduct trials in district court? हैं? बहुत कम जो लोग रेगुलर जाते हैं उनसे पूछिएगा आप क्या होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में. So, my lord, as far as, my lord, the present, why I'm saying this is, my lord, there are four versions, my lord, which are coming up. There is the FIR or the dying declaration where he says, my lord, the present applicant. There are two videos. What does Nayab Tehsildar says? Because Yes, my lord, the see, Nayab- the law requirement of law Sir, is but Nayab Tehsildar- that the statement is to be recorded by the executive magistrate. And Okay. if it's- Now executive magistrate has recorded his statement. But पढ़िएगा. that your lordship would see that's also beyond पेज 54 में पढ़िएगा. चलिए. उसका पूरा जो बयान है वो भी मतलब काफी डाउटफुल है. I'll just point that हाँ, out. as well. पढ़िएगा. उसको पहले ही सब कुछ पता था. हाँ. My lord, first paragraph, my lord, he reproduces was what was there, and your lordship may kindly come to paragraph 4 onwards, my lord. एक सेकंड. पैरा 4 पैरा 3 onwards. पैरा 3 पढ़िए. ये कहना सही है कि थाना निशातपुरा के द्वारा मुझे जो तहरीर पत्र दिया था उसमें मुझे आहत का नाम, पिता का नाम, उसकी आयु, उसका निवास स्थान बताया. कहना सही कि उक्त पत्र के अनुसार घटना दिनांक 17/12/21 समय 11 बजे के लगभग की जानकारी मुझे दे दी गई थी. अभियुक्त मधी लोधी के घर पर आग तापते समय जल जाने की सूचना उस पत्र में थी और अस्पताल पहुंचाने वाले ब्रिजेन का नाम भी उस पत्र में पुलिस ने लेख किया. यह कहना सही कि मृत्युकालीन कथन D5 से पहले पुलिस द्वारा दिए गए मुझे पत्र में मृत्युकालीन कथन से पूछे गए सवाल, नाम, पता, अभियुक्त मधु का नाम और अस्पताल में ले जाने वाले ब्रिजेन का नाम पत्र के माध्यम से मुझे पहले बता दिया गया था. उपरोक्त पत्र प्रदेश D6 जिस पर मैंने प्राप्त करके अवश्य भाग पर मेरे हस्ताक्षर किए थे. ये कहना सही है कि पुलिस को उक्त पत्र D5 में बताया था कि अभियुक्त मधु के घर आग तापने के दौरान आहत नरेंद्र 70% जल गया था. बेगमगंज की पुलिस ने मृत्युकालीन कथन लेने संबंध मुझे कोई सूचना पत्र नहीं दिया था. मैंने D5 का कथन थाना निशातपुरा में पुलिस अधीक्षक को अस्पताल में ही पुलिस आरक्षक को आरक्षक को अस्पताल में ही एक बंद लिफाफे में दिया था. आज मैं उस पुलिस वाले का नाम नहीं बता सकता हूं जिसको मैंने लिफाफा दिया था. मैंने उसकी पावती ली थी जो आज मैं न्यायालय नहीं लाया हूं. यह कहना सही कि वो लिफाफा आज प्रकरण में संलग्न नहीं है. यह कहना सही कि प्रत्यक्ष P5 का कथन खुली हुई अवस्था में ही है. मैंने D5 में ऊपर आहत का नाम, उसका पता, उम्र, निवास उसके बताए अनुसार लेख किया था और अस्पताल का नाम मैंने स्वयं लेख किया था. दिनांक, समय मैंने स्वयं ही लेख किया था. प्रकरण में जो आहत के कथन देने की स्थिति ऊपर और नीचे अंकित है जो द से द भाग पर है वो डॉक्टर रमेश चंद्र व्यास के द्वारा लेख है. D5 में ऊपर की टीप पेशेंट बयान देने की स्थिति में है. तारीख, सील सभी डॉक्टर रमेश चंद्र व्यास ने लेख की है. प्रदर्श P5 में नीचे द से द भाग की टीप पेशेंट बयान देने के दौरान होश में था कि टीपी डॉक्टर रमेश चंद्र व्यास ने लेख की है. कहना सही कि मैंने आहत की मानसिक स्थिति स्वयं नहीं जांची थी और डॉक्टर के लेख अनुसार ही है. आहत बयान देने के दौरान होश में रहने की बात बता रहा हूं. मैंने डॉक्टर रमेश व्यास को व्यक्तिगत तौर से नहीं जानता हूं. यह कहना गलत है कि प्रदेश D5 के असे भाग द से द भाग पर डॉक्टर रमेश चंद्र व्यास की ना तो हस्तलिपि टीप है और न ही उल्लेख में असे भाग पर हस्ताक्षर है. उसकी जांच करवा देते हैं ना, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को भिजवा देते हैं. आपका या तो एक्यूटल हो जाएगा या पूरा कन्विक्शन हो जाएगा डॉक्टर साहब के साथ में. डॉक्टर साहब भी आपकी चिंता करने के लिए रहेंगे जेल में. बट एक पैरा 15 एक और देखिए. पैरा 15 आई मीन मलॉट एंड मैं तो इसमें कुछ कह नहीं सकता, मेरा विटनेस भी नहीं है. हाँ नहीं हम करा देते हैं. Yes, कोर्ट Lord. को दैट अथॉरिटी इज देयर. आई डायरेक्ट इसकी हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की जांच कराइए डॉक्टर साहब की. डॉक्टर साहब अगर जो है गलत बयान दे रहे हैं तो मुलजिम बनाया जाए उनको. Not either ways, not that would not work in my favor, whichever way it is, because either ways वो तो इतने contradictory dying declarations है. I will just point out, my lord. जी, In जी. fact, my lord, he gives the video dying declaration as well. वो आगे इसने तहसीलदार ने भी कहा है कि वो वीडियो रिकॉर्ड किया है. हाँ, हाँ. And there he says everyone has pushed him in the fire. My lord, there are 4 different versions which have come up. One where he says the present applicant pushed him. The second is Kuldeep pushed him. Then, my lord, in the court statement, there's oral dying declaration to all eyewitnesses saying that all of them have pushed him. And, my lord, may kindly appreciate the present applicant is the person who accompanied him everywhere, my lord. In fact, he was the person who reached the spot. उसके घर भी गया. The deceased caught fire and from there he went to his house और वहां से अपने bedroom में चला गया. My lord, he did not go to the hospital. He went to his bedroom. The present applicant, my lord, actually went to his house and told everyone that he had actually fallen, my lord, and he was intoxicated himself. जी जी. All the witnesses said that. पीएम में आया है कि he was intoxicated. My lord, ये आ रहा है. I'll just point out. PW1, your lordship, may kindly see. नहीं पीएम में बताइए. पीएम रिपोर्ट से पढ़िएगा.
मतलब PM तो मतलब he has died after 4 days. हाँ, ठीक। उसमें तो वो वाला तो बात डॉक्टर ने भर्ती समय लिखा होगा ना, एमएलसी में आया होगा नहीं। इट इज स्मेलिंग ऑफ अल्कोहल। देहाती नालसी में भी है सर। क्या क्यों नशे में था? नहीं, नशे में नहीं, जलने से उसका उसने अपने उसमें देहाती नालसी रिपोर्ट उसने लिखाई है, खुद बोला है सर। मैं वो खुद ही कह रहा था मतलब कि उसको पिलाई थी। द डिसीज हिमसेल्फ मतलब इज सेइंग दैट कि उन लोगों ने बैठ करके मुझे पिलाई थी। मतलब में काइंडली सी पेज 21, मधु लोधी ने मुझे शराब पिलाई थी, वो ही ठीक है, हिमसेल्फ इज सेइंग, इसमें भी कह रहा है, देहाती नालची में भी कह रहा है कि मधु लोधी ने जो धक्का दिया। और शराब पिलाई थी वो बोल रहा है। ठीक है, And your lordship may see, he is the person everywhere. The PW1 family members, father, wife, all of them admit this fact, my lord, that the present applicant, my lord, was around. Okay. And it had it, and they admit the fact that there is no previous animosity. और Okay. 2 साल, my lord, in fact not 2 years, 19, 12, 21 से जेल में, all other 3 have been granted. ठीक है 4 criminal records is there. जी। चलिए देखिएगा, श्री संकल्प कोचर लर्नेड काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट माधव एलियस मधु, son of Shri Motilal Lodhi. This is full stop. This is second bail application under section 4. Third bail application on behalf of the applicant under section 439 CRPC. Full stop. Case crime number 409 of 2021 is registered at Police Station Begumganj, District Raisen for offence under section 302 read with 34 IPC. Applicant is in custody since 19/12/2021. Full stop. Reading from the statements of Dr. Ramesh Chandra Vyas. PW5, it is submitted that this Dr. Ramesh Chandra Vyas in his cross-examination has admitted that dying declaration exhibit D5 was not recorded in his presence. It does not contain his signatures, nor it contains his seal. Full stop. It is submitted that this is sufficient to discard the dying declaration in as much as the injured has given contradictory statements at different places, and therefore applicant should be given benefit of bail. Full stop. Other 3 co-accused persons too have been enlarged on bail. Applicant is in custody for about 2 years, therefore he be enlarged on bail. Next one. Shri Nitin Gupta, learned counsel for the state, in his turn submits that the Nayab Tahsildar Rajan Sharma, who had recorded this dying declaration exhibit D5, has categorically mentioned that he had recorded dying declaration in presence of the doctor, and the dying declaration contains seal and signatures of the concerned doctor, and the note appended is also in the handwriting of the said doctor. Full stop. Take Shri Nitin Gupta also submits that even in the Dehati Nalishi, author, that is the deceased, has categorically taken name of the present applicant Madhu, who had pushed him in the fire. Full stop. Thus it is submitted, and it is also submitted that there is a criminal record of 2 cases. 4. 4 cases. 3 another case. 3 3 another, एक ये सेम है. 3 cases. तो criminal record 3 cases का था. 3 cases against the present applicant. Next one. After hearing learned counsel for the applicant and the learned government advocate, comma, as far as authenticity of the dying declaration is concerned, comma, executive magistrate Nayab Tahsildar Rajan Sharma has proved it. Full stop. As far as contradiction in the statements of the doctor are concerned, they are not trustworthy. Trial court will be free to send the dying declaration exhibit D5 for the examination of the handwriting expert at the police headquarters to ascertain as to whether the handwriting on the dying declaration mentioning within inverted commas patient fit for statement 18/12/2021 11:57 AM inverted commas close, and that of patient conscious
ड्यूरिंग स्टेटमेंट डेटेड 18/12/2021 12:09 PM is in whose writing and who has signed it, in as much as there is a mention of word for in the beginning of the statement, and therefore it was solemn duty of Dr. Ramesh Chandra Vyas to mention as to who had signed for him as by writing words for. Full stop. That leaving this to the discretion of the trial court, comma, looking to the dying declaration, comma, there are no, and the evidence of Rajan Sharma, concerned Naib Tahsildar and Executive Magistrate, there are no changed circumstances calling for interference. Third bail application fails and is dismissed. The trial court be directed to expedite the trial. At this stage, Shri Sankalp Kochar submits that trial court be directed to expedite the trial. This request is not opposed. Trial court is requested to expedite the trial. Serial number is not material with 6 months. हाँ ठीक है, नहीं नहीं कुछ नहीं आएगा. सही कितने केसेस पड़े हुए हैं, कितने लोग, so many people are languishing in jail. Your client is not special. Upadhyay